है, मैं आईईएसा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये बताता है आपको स्केल। हम अभी तक सिर्फ शादियों को सोचते हैं लहंगा महंगा, लहंगा नहीं है सिर्फ, वो एक आर्ट पीस है, एक शो पीस है, एक थॉट प्रोसेस है। कोई उस शो को समझ रहा है, बेच रहा है, उसको सस्टेनेबल कर रहा है। क्योंकि देखिए पहले फ्लेक्स होता था प्लास्टिक, अब आप देखिए वोवन फ्लेक्स है, डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल है। हम लोग एक अवेयर, सो आपको एक पूरा मार्केट प्लेस मिलेगा। इसका मकसद क्या है? इवेंटफुल भारत का एक मकसद है कि बहुत सारे एसोसिएशन मिलके साथ चलें, एक प्लेटफॉर्म बनाएं और पैन इंडिया जो टैलेंट है, और वो किसी भी चीज़ में हो सकता है जो इवेंट इंडस्ट्री से है, भले वो टिकटिंग हो, जैसे हमारे पास आईआईटी तक से इंक्यूबेटर्स आए हैं जो कर रहे हैं सॉल्यूशंस। हम ये चाहते हैं कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। आप आइए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत बारी उनको पता ही नहीं होता कि एक बड़ा इवेंट में होता क्या है। यहाँ आके देखिए कि एक इवेंट बनता कैसे है, होता कैसे है, और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग उनको कैसे सपोर्ट करते हैं? थैंक यू सो मच। मुझे लायन डॉक्टर सूरत सिंह मल्होत्रा कहते हैं। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएसए हूँ। एक कंट्री है हमारा द किंगडम ऑफ लेसोथो, मैं उसका कौंसल भी हूँ पिछले 12-13 साल से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैं बेसिकली साउथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन ऑल इंडिया भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये तो मेरी इंट्रोडक्शन हो गई। अभी आप बोलिए मैं क्या बोलूँ। आप गिर जाता है, स्टेप के ऊपर से कुछ लग जाता है, आप क्या कर लोगे उसको? इसको सिचुएशन संभालना बोलते हैं। एवरेज देखा जाए तो कितना रोजगार कितना दे रहा है ये कम, क्योंकि एक गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर बन जाता है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत बाद में आती है। एक रोजगार का साधन जो देखो, साधन सारे उनके पास हैं, इसलिए पैसा तो वहीं से ही आएगा। लेकिन आपके घर में जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। पहले तो आपसे शुरू हुआ, फिर आप 10 लोग बना के एक एसोसिएशन बनाते हो, तो एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है। पेपर एजुकेशन अपना एसोसिएशन है, टूल्स एसोसिएशन है, कंप्यूटर एसोसिएशन है, डॉक्टर एसोसिएशन है। सबको कुछ ना कुछ होना है और सबका आइडिया अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, कोई भी सोसाइटी के लिए कितना भी करे, सोसाइटी को भी पैसे चाहिए, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। तो फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट कटिंग इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ से शुरू होती है इनोवेशन, कि सामने वाले को कम पैसे में क्या बढ़िया चीज़ दे सकते हैं, कितनी देर में दे सकते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेन्यू। Krishna Rao, I am from Hyderabad. I am represent for this aircon. We provide for the temporary air conditioning. I am the vice president for the IESA organization. Thank you once again. From Impress Decos Private Limited, Chennai, Tamil Nadu chapter. I'm very happy to part of IESA. Thank you. मेरा नाम मल्होत्रा है। मैं आईएसए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अजी आवाज़ नहीं आई भाई। शो है जिसमें स्वागत है यहाँ पे। आप अपना टाइम लेके आए ऐसे भयानक मौसम में। हमारी ऑर्गेनाइज संस्था है, एक एसोसिएशन है, इंडियन एग्जीबिशन सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। तो आप जितने भी इवेंट्स देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, G20 होता है, जो करने वाले हैं, मतलब हर चीज़ जो आप देखते हैं, एक कील से लेके सब कुछ जो होता है वो हमारे ही मेंबर्स करते हैं। हमारे साथ में शिबू सर हैं, ये पवेलियंस एंड इंटीरियर्स के डायरेक्टर हैं। जो आपने G20 देखा था, महाकुंभ में आपने जो वर्चुअल म्यूज़ियम देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ था, वो इनकी कंपनी ने किया था। मेरे लेफ्ट में सूरत सिंह मल्होत्रा जी हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे आने वाले प्रेसिडेंट भी हैं ये एसोसिएशन के। ये हैदराबाद में एक बहुत, जितना भी आप हैदराबाद का साउथ का जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेगा इवेंट्स, वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। इन दोनों के साथ अगर, और हमारे बाकी मेंबरान जो हमारे साथ हैं, अगर आप तमिलनाडु है, सर है, भट्टर सर है बॉम्बे से, भारत के आसपास, मतलब ऑल ओवर, या मेरी हिंदी बहुत बुरी है, इससे ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी चलेगी? हाँ चलेगी चलेगी, बाकी एडिट कर पैन इंडिया हम लोग अब जहाँ पर भी इवेंट्स देखें, और देखिए भारत ऐसा देश है कि
पैदा होने से लेके मरने तक इवेंट है। और आज की डेट में जैसा G20 मोदी जी ने किया था, वो तो आज तक वर्ल्ड लीडर्स एक्नॉलेज करते हैं जो सेशन के लिए भी आए थे कि उतने बढ़िया मीटिंग उन्होंने देखे नहीं। अगले साल अब ब्रिक्स आने वाला है। इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी। We will be looking at another mega year in the BRICS where multiple meetings G20 की तरह होंगी और उन मीटिंग्स में जो शक्ल, जो रंग, जो सब कुछ डालेंगे वो हमारे यहाँ के मेंबर्स ही डालेंगे। हर चीज़ जो होगी, आप ये देखिए कि इंडियन इवेंट इंडस्ट्री को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको यहाँ मिलेगा। और अब मैं अपने सीनियर मेंबर्स को बोलूँगी आपसे बात करें, इससे आगे मेरे में धार मैम। इस एक्सपो में हमने एक चीज़ शुरू करी है जिसका नाम हमने इवेंटफुल भारत रखा है। इवेंटफुल भारत नाम के बीच में दो शब्दों का बहुत सोच के हमने रखा है। इवेंटफुल क्योंकि भारत इवेंटफुल है, आपके घर में मुंडन से लेके एज आई सेड G20 तक। भारत बिकॉज मोदी जी के इसमें अब हर शो जो है, जैसे स्टार्टअप है, ऑटोमोबाइल्स में हर चीज़ अब भारत है। वी आर प्रमोटिंग ब्रांड भारत। भारत टुडे एज अ वर्ड इज़ अ ग्लोबल ब्रांड। सो इवेंटफुल भारत इज टॉकिंग अबाउट द इवेंट इंडस्ट्री बिकमिंग अ ग्लोबल ब्रांड। और हम चाहते हैं स्टार्टअप्स, न्यू कमर्स, न्यू टेक प्रोवाइडर्स, किसी एसोसिएशन का आप हिस्सा नहीं है, हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको पोडियम देंगे जहां आप इंडस्ट्री, अगर आप देखेंगे तो सेशंस हो रहे हैं जिसमें छोटे इंक्यूबेटर्स से लोग, टेक प्रोवाइडर लोग आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री वालों को दिखा रहे हैं। हम लोग एक जगह बैठते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, हमको नहीं पता होता। वो लोग जब हमारे पास आएंगे, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि आगे चल के, अकल सीमित नहीं है सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई जुड़े। और जैसे मोदी जी ने G20 में अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक में इवेंट्स किए थे, हम चाहते हैं वहाँ की लोकल फ्रेटर्निटी भी ग्लोबल शोज़ करने को हो। ऐसा नहीं हो कि आपको कश्मीर में या गुवाहाटी में शो करना है तो आप दिल्ली या बॉम्बे का वेंडर ढूंढें। हम लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको एम्पावर करना चाहते हैं। इवेंटफुल भारत बस वही है, इट्स एन एम्पावरिंग टूल जिसमें मल्टीपल एसोसिएशंस मिलकर, हम लोग अकेले नहीं कर सकते, सब साथ चलेंगे तभी कारवां बनेगा। तो कोशिश है। तो मैम ये B2B है, ये ही रहेगा क्योंकि ये सोल्यूशंस है, प्रोडक्ट नहीं है। वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर टर्नकी सॉल्यूशंस। मैडम ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं 90% हम देखते हैं ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इससे जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं साथ में आप जैसे मैनेजमेंट उनको टच नहीं करते हैं। और बहुत बाद में क्या होता है कि कारण एफिशिएंसी और दुनिया भर की उस तरीके से उनको भी आउट ऑफ कर दिया जाता है। आप अपने जुड़े हुए नहीं, बिना उनके हम नहीं चल सकते, बिना उनके नहीं चलते, लेकिन उनको एक सामने देखें तो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पास काम है तो उनके पास काम है, हमारे पास काम नहीं है तो उनके पास फिर भी काम है कि किसी और के पास काम है, तो वो बिजी हैं। आप उनके लिए ये फिक्र मत करिए। हमारा सब्जेक्ट ये था कमिंग टुगेदर। 10 साल पहले हमने ये सोचा कि मिल के आगे बढ़ते हैं, इकट्ठे चलो। आज हम बोल रहे हैं वॉकिंग टुगेदर, दैट इज़ द अचीवमेंट। कल तक उनको नहीं समझ थी क्या करना है, आज उनको भी समझ है, हमारे को भी समझ है। हम आगे ढूंढ रहे हैं कि हम आगे सबके साथ मिलके कैसे चलें। तो मिलके चलना ही कामयाबी है। अकेले चलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैडम ने कहा कारवां बनता क्या, आज ये कारवां है। कल तक हम कॉम्पिटिटर्स थे, आज हम सारे मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि कोई आप सब खड़े हैं ना, अकेले तो नहीं कोई कर सकता। तो एक आदमी रिपोर्टिंग करके सब पेपर्स को देगा क्या, ब्यूरो में दे देंगे, ब्यूरो में लिमिटेड ही छपेगा। अब आपके अपने अपने व्यूज़ हैं, हर किसी के पास अपने पास एक दिमाग है। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन की, और डिज़ाइन हर किसी के पास अलग अलग है। वो वैसा प्रेजेंटेशन देता है, क्लाइंट उसके हिसाब से एडजस्ट होता है, उसके हिसाब से कॉस्टिंग आती है, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम भी सीखते हैं। धक्के खा के कोई भी बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू नहीं होता, थोड़ा
उसको रगड़ना पड़ता है, थोड़ा होगा, थोड़ा दौड़ेगा, थोड़ा गिरेगा, संभलेगा, तो बुढ़ापे तक आएगा। हम भी थोड़ा बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। 10 साल तो हो गए हम साथ चल रहे हैं। अगले साल हर साल इम्प्रूवमेंट है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। पर्पज़ यही होता है अननेसेसरली क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मिलके निकलेंगे, निकल जाएंगे और हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है। फ्यूचर क्रांति में कितना ठीक है। एक मिनट 10 साल पूरा हो गया। ओके सर। 10 साल के बाद पीछे करो यार कैमरा। तेज 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 ठीक है हमारी आ रहा है यार। चुप रहो। फाइट में फाइट ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। GPT प्रो है तो वो मुझे सोरा में जाके एक सेट डिज़ाइन दे सकता है, लेकिन उसे यशो को भी नहीं पता। सोरा गारंटी नहीं लेगा कि 1 लाख आदमी यहाँ घुसेगा, उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग गिरेगा कि नहीं। सोरा ये गारंटी नहीं लेगा कि आग लगेगी नहीं। सोरा ये गारंटी नहीं लेगा कि जो कूड़ा बन रहा है उसका मैनेजमेंट होगा, वो बाहरी ढेर नहीं होगा। सोरा आपको बहुत सुंदर लग सकता है क्योंकि उसका काम ही वो है, लेकिन राजमा चावल में आपको जितने मर्जी खूबसूरत दिखा दूँ, आपको अपनी माँ के हाथ ही अच्छे लगते हैं। आप उसी वेन्यू में, उसी इवेंट में जाएंगे जहाँ आपको डर नहीं है कि आपकी छत पे स्कैफोल्डिंग गिरेगी। सोरा वो एनालिसिस नहीं कर सकता। एआई आपको डिज़ाइन दे सकता है, एआई उस डिज़ाइन के अंदर एनिमेटेड आदमी चला सकता है, पर क्या आप उस एनिमेटेड आदमी की जगह खुद को रखेंगे, वहाँ हम लोग आते हैं। एआई को चलाना हमारा काम है, एआई हमें नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि when we are in an event, we are dealing with lives, and that only human touch, human analysis, human science, scientific studies. हमें पता है ये ज़मीन कितनी उठा सकती है, ये कितना लोड उठाएगी, हमें पता है ये सीलिंग कितना लोड उठाएगा, हमें पता है बाहर जितनी मर्जी बारिश हो जाए यशोभूमि के अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा। ये सोरा नहीं बता सकता, चाहे मैं उसे सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स भी दे दूँ तो भी वो नहीं बता सकता। आप एआई से आप You will be partners in this. We will make mistakes. It's our first edition. We want you to help us, hold our hand, take this little thing forward, make it into a national movement where I met this boy from Kashmir who did amazing weddings. I met somebody in Shillong up in the hills who does amazing music shows. I want to bring them to national platforms. I want those people to have a voice. And I know it is each and every person here who will make that possible. It is only then we can have an integration in India. So I would like you to welcome our little girl who will come and go and okay, now she's now very scared. This is in Indian tradition. This is called an akhand diya. It's the eternal flame. We don't want you to light a lamp. This is an eternal flame of something that we are hoping will continue. You take it back with you. Keep it on your tables to remind every service provider's office. All of you will make sure that every person in India who is coming into this industry gets a voice, gets a stage. We have invited startups from incubators. I have my dear friend Nihal here who started, if Nihal is somewhere, if you can come forward so at least they know that I'm not talking nonsense and there is some subject matter expert here also. Nihal, can you come here? So Nihal, I would like to introduce all of you to Nihal. At the end of each day, I request all of you to give me feedback, positive criticism, good criticism, bad criticism, how we can make this forward.
Another very important thing that we have done, of course, as usual, Delhi rains played truant and the gentleman could not come. In skilling, Sonia will understand my love for skilling. So if I can please invite Pooja. Pooja is the COO of the Media and Entertainment Sector Skill Council. They have a vertical on events, if you can talk about it, which is led by Wizcraft. And we're doing an MOU with them. There is an MOU somewhere. We are all lost today. The Rains has done some great work with us. So we're signing an MOU for 2 years with MESC and Iesa. This is on upskilling in design, because design is critical for all shows. This is where it begins. This is where the idea germinates. Now with AI taking over most of our jobs in the design sector, we want to make sure that she will help in AI to be a tool and not lead the show. How to use AI better design innovations. They have studios pan-India. She will tell you better. I hand it over to Pooja to say a few words. Thank you so much, Uma. It's been a pleasure being here, and trust me, it's a pleasure being here. And first of all, good morning everyone, and being a part of this India Expo show is a pleasure, and I'm looking forward to have maybe 25, 50 or 100 editions of India Expo show coming up every year. We are glad to be partnering with Iesa, IESA for skilling, upskilling and reskilling. Skilling, upskilling and reskilling, where we understand the need of skilling. As the Media and Entertainment Skills Council, we work under the aims of NSDC and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and cater to 12 different subsectors of media and entertainment, including film, television, OTT, print, digital, and theme park events is one of. Still. See the whole industry connections to all who have put together this event. And Uma, you are passionate right from the first day you were born, and you've been contributing a lot to the exhibition and events and conference industry. But here are big stalwarts, and I don't have the right to say because they were born before me, and they were actually holding me by hand to join the exhibition industry. Now, whether it is Mr. Binu, whether it is Shibu, whether it is our Vipul Agarwal, our Mr. South India. You are the big leader, not just South India, but Mr. Bhandar Association, Suraj Dhawan. He's done a great job in the last 2 years, and will continue to do a great job in future as well. I'm very glad that I'm sitting next to Phil, who happens to love India and who happens to show his passion in creating this great venue, working together for several years and facilitating great events to take place. So Uma, what you've done, your standard should be the Euro shop in Düsseldorf. I'm sure you all visit, and that's a standard which we have to bring to the Indian exhibition industry. And you touch the topic of skilling. It should not be just close to your heart, but it should be close to everybody's heart. And I think Iesa is doing a great job in skilling, but IEEE also. What we need to create is standards. We need to create policies. We need to create occupational health, safety. We need to create, sustainable materials. We need to create, work ethics. We need to create a lot of, and I'm sure the industry is gearing towards this particular effort, what we have tried to put in.
And I think both IESA and IEIA and of course ईईएमए and various other organizations will continue to work together. But what we need to create is a center of excellence. So you're working with various sectoral councils. So if IEIA, ईईएमए, IESA and one or two Sagar, you're also there. So when Uma would request somebody to speak, he better speak. We don't have a choice and we have to be very truthful today, otherwise she'll take a class tomorrow. So good morning everyone. On behalf of the entire exhibition fraternity, I welcome you all to a brilliant show which has been conceived in less than 6 months' time. Personally, I feel that how we talk about the growth of industry, the industry is growing, galloping at a very mind-boggling pace. Talking about statistics, talking about the entire MICE industry being $870 billion, becoming $1.5 billion by 2030, and India moving from less than 5%, there is a lot of work and opportunity for all of us. But while we say that the business will grow, the business will only grow if we are able to follow 5 basic skills for our growth. Number 1, there has to be investment in technology. As manpower will continue to be more expensive, technology has to replace some of the works which were very manual in nature. The whole world talks about AI replacing jobs. That is not going to happen as long as AI is your tool to do work quicker. AI will make you work 10x faster, but that does not mean it will replace you. While AI is coming up with brilliant designs, that does not mean that they come up with perfect designs. One has to monitor and see how it will meet your purpose. So investment in technology is the first thing which all of us have to do. Second thing which is important is how we are going to invest for larger events. Some of the stalwarts sitting in this room understand that maybe Octonom is losing weight, maybe people want better modular designs, but all these things have to be designed keeping in view sustainability in future. So what investments our service providers, our service partners are going to make now will be a real crux of the success of this exhibition. If you go around, you see so many new solutions which are fundamentally which need to be invested. The third point which I feel is very important is about venue. We are in a very beautiful venue which Phil and his team have been such beautifully manicuring and managing. But how growth will go to tier 2, tier 3 cities again is what the investments will decide. Today in this hall I see more than 10 companies offering solutions for German anchors, pagodas, etc. These investments, these purchase orders today will determine how tier 2, tier 3 cities will grow in future. I hope some of the service partners would give large orders this time to see what is important. Fourth thing is skilling. The next generation of people do not want to work in very hard labor intensive industry. So how we have to keep them enticing is how your skilling will determine. Today if you go to Europe, a team of 6 can do 1000 square meter of shell scheme in 2 days. This may not happen in India, but very soon this will happen in India as well. The fifth thing which I feel is very dear to my heart right now is how we are able to save our planet by following sustainable practices. I feel on the exhibition floor still a lot of waste is being generated. How we are going to transform our thinking, how we are going to tell our exhibitors, our contractors that these are best practices to work
will determine our future. Uma and her team has done a brilliant job. I would like to congratulate Uma and her team for delivering this. And I do hope that the second edition will be announced by the end of this edition getting over. Thank you. Everybody, and I didn't expect to speak through this session, but I guess it's a very important event to me and to the industry, and I think lifting up the level of awareness of ESG and how to apply those concepts to all our bus fabricator and other event vendors of many types. And, actually it's a pretty time-consuming and stressful thing to all of us, but it's very necessary because investors outside of India is eyeing India from that perspective, even though it takes some more time. But they would love to find out those right ESG-related policy keeper of our sector, because they have to follow their headquarter norms and regulation, because they have to calculate how much kilogram carbon dioxide equivalent they generate through the event and each and every person's travel, and how much kilogram of carbon dioxide you generate out of making all those buses. This is ESG perspective. So now they are given, the people outside America, Korea, Canada, they are given with such KPI, every staff members of the company, in order to attend a show in India. They have to compare and they have to check those. And if going to India consumes a lot more kilogram carbon dioxide equivalent, they have to choose other destination. So this is our important agenda. So through this opportunity, it's not all about ESG, but if you consider this ESG point as a preventive measure for the future, it might be really notable occasion will be. And we as a venue operator, we are operating two large venues in South Korea and also Penang Convention Center, and now the largest Yashobumi venue in here. And we'd love to contribute a lot to the development of such progressive policies and endeavors through Yashobumi and beyond. Thank you very much for organizing this event and giving an opportunity to speak about this. I was wondering, there are a lot of exhibition happening around the country, and we are generating a lot of waste. Thank you for pointing out this fifth point of your conversation, waste. So I am representing an association who is working in the waste management for last 25 years, and I am glad that exhibitors in this exhibition is talking about waste generation, carbon dioxide mitigation, ESG. So these are also very important points. We all are here to sell our products, to promote our products and generate awareness about new technology. But this is also very important, sustainability. So this environment, this life means we have to carry forward the same environment to our next generation. And we were discussing with Uma how to develop such SOPs. I think there is a need to develop a standard operating procedures before exhibiting or before organizing any kind of such events. Therefore, we can ask the exhibitors to follow these kind of procedures before you put up your products, put up your stalls. And after the completion of event, the waste or the whatever you left in this event can be managed scientifically and in an environment sound manner. So I think I'm available to work on this SOP. I'm developing a lot of SOP on waste, various kind of waste generated by us. So it would be a great opportunity. So we can collaborate on this. Not on a commercial level, as a knowledge partner, I can help you. Sir. Thank you. Also, thanks a lot for the opportunity to be here. I must tell you all right at the outset that for this particular event, I just received a mail from
and I didn't even look at the mail. I said yes, because whatever you say, she's not going to listen, and it has to be a yes. Having said that, as I walked in the morning, it's a matter of great pleasure to see all the leaders in the industry from different parts of the ecosystem here. And as EMA, we have been making our own efforts in trying to bring together the ecosystem. I'm sure a lot of you would be aware that the Honorable Prime Minister is now working on a creative economy, and there is a planned budget and a way forward that is being formulated for a creative economy, which is going to take India to the world. And as EMA, we are working on a thought process of how we present ourselves to the outside world from here on, because the whole world is looking to come into India. And if we want to be the third largest economy somewhere down the line in the next 2-3 years or 5 years, there are multiple areas that we all need to improve upon. Though it's a matter of great pride that everyone sitting here in and off the dais are leaders in their spaces, I guess we all must admit we are more or less fossilized. Our time, our thought process is still old school. We need to open our minds, we need to open our thought processes and be able to adapt to new technologies, new ways of working, new thoughts, shorter term proposals, and be able to execute that. For that, I love Sonia's idea of that center of excellence with multiple associations putting together the best foot forward across the country. It's a very good way of moving it. I must also tell you that this year, imagine, we did launch a code of conduct, which was a first. We've launched a health and safety initiative, which is going to be testing basic safety standards with a mobile app and online subscription for that. So you can real time check how safe the people are working on your events, etc. It's just the beginning, and this is being introduced in a phased manner as we go. We have introduced a green initiative. From a skilling perspective, there are multiple efforts that are being made. But again, all said and done, whether it is EMA or IESA or IEIA or any association, it cannot be done at random. We all need to work in tandem. And I do look forward to working with each and every one of you guys and being able to build a robust system in such a way that we drive larger business to come into India. There are people waiting, larger events are waiting, they want to come into India right now. Their only doubt is, can India do it? Can we do it as businesses? Can we push it, pull it off? We need to show the world. We can only show the world once we all move together. Let's hope we all get to work together and work well on that front. So, thank you. This thing, and again this is off the record and he's going to kill me for this, but I would definitely like Mr. Nanubinu to speak, and don't ask me what, otherwise I'll tell you to recite a verse. I thought I will have a peaceful morning here, and why is spoiling that? I listened to all of you, all valid suggestions. We should go with all of them. How we will decide later. I don't know whether I was 1 minute late coming here. Whether Uma talked of 10 years of IESE. You did, yeah, and also. आयुष हेलो भैया ये नाचने वाला जो सीन है ना बड़ा खराब है बैक रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैं
आगे का शौक है ना मीडिया पे आगे आने इसी रहने से से ले ले। तुम कुछ भी कह लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। सर एक मिनट सर ये क्लिक करके हट जाऊँगा मैं सर। आप सर मैम सवार है एक मिनट बैठ जाओ, एक से बैठ एक मिनट बैठ जाओ। भाई थोड़ा सा जल्दी कर लो यार। मैम सर लुक हियर। अरे यही रहिए।